Very good afternoon. Today, all Arunachal Pradesh Youth Organization is going to organize a revolution movement in Arunachal Pradesh against the deadly drugs prevailing in the state of Arunachal Pradesh. Before going in detail, let me introduce myself, Kipa Kanam, the president of all Arunachal Pradesh Youth Organization, and Sri Porge Nosi, the Chief Advisor of all Arunachal Pradesh Youth Organization, and left side the Vice President Sri Tau Kumarji. So we came here to share our view regarding the deadly prevailing of drugs in the state of अरुणाचल प्रदेश. अभी का सिचुएशन में हम देखा है कि अरुणाचल प्रदेश में इतना ड्रग्स है कि इस ड्रग्स जो एक बीमार का रूप में, एक कैंसर बीमार का जैसे रूप में अभी प्रेवलिंग हो रहा है. तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन उस बीमार को, ये नशा को हम लोग ने डिसाइडेड निर्णय लिया है कि अंदर दी नशा मुक्त भारत अभियान का नाम से, जैसे नेशनल दिल्ली लेवल से ये शुरू करके आया है. तो हम लोग ने अभी निर्णय लिया है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्टेट में इतना ड्रग्स प्रेवलिंग हो रहा है कि जैसे कि आपका ड्रग्स एब्यूज का अलार्मिंग ऑफ द ड्रग्स अब्यूज इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, या रुकने का जगह ही नहीं है इसे. और अनकंट्रोल ड्रग्स सप्लाई एंड स्मगलिंग, इनसफिशिएंट रिहैब सेंटर एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, इवन फ्रॉम द एनजीओस, इंक्रीज क्राइम लिंक टू द ड्रग्स अब्यूज, ऐसे ऐसे करके बहुत कुछ यहाँ में प्रेवलिंग हो रहा है. उस प्रेवलिंग को हम लोग देखते हुए निर्णय लिया है कि नहीं, हम लोग आगे जाना पड़ेगा. जहां तक हम देखा है कि यहाँ में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आज तक स्पायर हेडिंग नहीं होने का कारण से ये ड्रग्स जो मिनिमाइज बिल्कुल नहीं हो रहा है. मैं आज इसीलिए यहाँ में आपका सामने आ रहा है कि हमारा स्टेट ऑफ अरुणाचल फ्रॉम लोंडिंग टू तवंग, ये हम लोग संदेश दे रहा है कि अभी ऑल अरुणाचल प्रदेश यूथ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग ऑर्गेनाइज करके स्पायर हेडिंग करेगा, कैसे मिनिमाइज करेगा, कैसे आगे ले जाएगा. तो उसको ले जाने के लिए वी हैव डिस्कशन विद द ऑनरेबल मिनिस्टर श्री मामा नतुंग जी. इन डिटेल में हम लोग ने डिस्कशन हुआ है एंड ऑनरेबल मिनिस्टर ही हैज एश्योर to support us to minimize and eradicate the drugs being prevalent in the state of Arunachal Pradesh. तो उन राउंड टेबल में हम लोग ने डिसीजन लिया है कि we have submitted 5 points memorandum to the state government अंदर द होम मिनिस्टर का अंदर में हम लोग सबमिशन किया है. द नंबर 1 पॉइंट, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट नार्कोटिक इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. तो ये नंबर 1 पॉइंट इसीलिए हम एस्टेब्लिशमेंट इमीडिएट करना है बोल रहा है कि नार्कोटिक डिपार्टमेंट नहीं एस्टेब्लिशमेंट नहीं होने का कारण से यहाँ में बहुत उछल मुचल 2, 3, 4, 5 डिपार्टमेंट जो इस टारगेट को स्पायर हेड नहीं कर पा रहा है. इसीलिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नार्कोटिक डिपार्टमेंट इन द स्टेट इज वेरी वेरी बहुत जरूरी है. नंबर 2 हम लोग ने सबमिशन किया है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिहैब सेंटर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर. नंबर 3 हम लोग जो organize state with awareness camping to educate the youths, educate the CBO parental organization, उसको हम लोग ऑर्गेनाइज करेगा. एंड 4 नंबर जो है rigorous एक्शन अगेंस्ट द ड्रग्स पेडलर एंड सप्लाई. ये पॉइंट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है. आज तक लास्ट 10 साल 20 साल से जो भी ड्रग्स एडिक्ट को एक्शन लिया जा रहा है कि पुलिस का डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट, टैक्स एंड एक्सेस का डिपार्टमेंट, वो रेगुलर पनिश लेता ही नहीं है कुछ चीज को, मैक्सिमम केसेस को. इसलिए नहीं ले पा रहा है कि वहां में बहुत 3-4 डिपार्टमेंट जो कंफ्यूज में क्रिएट करके रखा है. इस डिटेल में हम जाएंगे अभी. नंबर 5 जो हम लोग सबमिशन किया है कि क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर रिकवरी एडिक्टेड पीपल. जैसे रिहैब सेंटर हम लोग खोलने का बाद में ड्रग्स एडिक्टेड वाला जो है रिकवर करके आएगा, उसको भी जॉब अपॉर्चुनिटी देना है बोलकर हम लोग गवर्नमेंट को सबमिट किया है. कारण क्या है कि अभी ड्रग्स प्रेवलिंग में कोई लोग फांसी लगा के इतना लोग मर गया, हमको पता है. कोई लोग मर्डर करके मर रहा है, उसका ड्रग्स का वजह से. कोई लोग अपना घर का पैसा नहीं होने का कारण से अपना घर का वो पंखा को चोरी करके, जो एल्यूमिनियम वाला बाल्टी वो डेगची वो लोग को चोरी करके फिर उसको बिक्री करके ड्रग्स यूज कर रहा है अभी हमारा यूथ जो है. और उसका वजह से हमारा स्टूडेंट्स उसमें इन्वॉल्वमेंट, फ्रेंडशिप में पूरा इन्वॉल्वमेंट होकर पूरा प्रेवलिंग हो रहा है. तो उस चीज का वजह से अभी रिलेटिव्स तकलीफ, फ्रेंडशिप, स्टूडेंट्स
एकदम सब कुछ में बहुत तकलीफ हो रहा है, इसलिए हम लोग निर्णय लिया है कि उसको हम लोग जो ऑल अरुणाचल प्रदेश यूथ ऑर्गेनाइजेशन स्पायर हेडिंग करते हुए हम लोग अवेयरनेस करेगा और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को स्पेशली द ऑनरेबल सीएम को अपील करता हूं कि आप अ, होम मिनिस्टर को नारकोटिक डिपार्टमेंट को जल्द से जल्द आप हैंडिंग टेकिंग आप उसको अपॉइंटमेंट करने से अच्छा है। यहाँ में इसीलिए करने से अच्छा है कि हम मिनिस्टर का डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ में अरेस्ट करता है, लेकिन अरेस्ट करने का बाद में फिर मेडिकल डिपार्टमेंट जो फिर उसमें इन्वॉल्व है, उसका साथ साथ में फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ टैक्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट वो इंस्पेक्टर लोग फिर इन्वॉल्व है, बाद में फिर एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है। यहाँ में 4 डिपार्टमेंट जो कंफ्यूज क्रिएट कर देता है, इसीलिए हम लोग अभी यहाँ में प्रेस ब्रीफिंग करना पड़ा है। वी हैव 22 डिस्ट्रिक्ट हम लोग डिप्टी कमिश्नर को बात कर चुका है, इंटर अरुणाचल फ्रॉम तवांग टू तिरप और लोंडिंग डिस्ट्रिक्ट को नहीं किया कुछ कारण का वजह से। ये हम लोग अभी फिर दोबारा जाएगा, इसीलिए एसपी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट का कहने का मतलब जो है वो लोग 100% एश्योरेंस दिया है कि वो लोग भी साथ देगा। यहाँ में इन्वॉल्व में ड्रग्स को किसने मिनिमाइज नहीं करता है हमको पता है। नेक्स्ट प्रेस ब्रीफिंग में हम ब्रश आउट करेगा, यहाँ में इन्वॉल्वमेंट ऑफिसर भी इन्वॉल्वमेंट है, हमारा पास में लीज है, आज हम बता नहीं पाएगा। इसीलिए हम रिक्वेस्ट करता है कि जितना भी ऑफिसर जो इन्वॉल्व है जो खुद कहता है ठीक अच्छा बात है, लेकिन आप खुद कह के फिर अपना रिलेशन को देना, बीबी बच्चा को तंग करना और अपना फ्रेंडशिप सर्कल को सेम चीज को खिलाना ये गलत है। इसीलिए हम अपील करता है कि एनी ऑफिसर इन द स्टेट आप थोड़ा तैयार रखिए। द अपीओ इज एक्सपायरिंग द इश्यू, हम लोग अभी एक दिन कुछ करने जा रहा है। हम रिक्वेस्ट करता है कि आप दूसरा में स्प्रेड नहीं करते हुए आप यूज करना है तो भी कर दीजिए। सकने से आज का दिन से टुडे इज आई थिंक 5th of February 2025, आज से मिनिमाइज करने की कोशिश कर दीजिए। और हम लोग छोड़ने वाला नहीं है कि कुछ कुछ ड्रग्स पेडलर एंड सप्लायर को और डिमांड एंड सप्लाई का चेन को हम लोग खत्म करने की कोशिश करेगा। बिकॉज ऑफ द सप्लायर एंड पेडलर हम लोग का लड़का लोग उस लाइन में जा रहा है। सो ऑन दैट केस हमारा द चीफ एडवाइजर को हम रिक्वेस्ट करता है कि एक दो सब रखे। Thank you, Mr. President. In fact, the drug addiction and drugs inflicted society in the Arunachal Pradesh is known by all of us. It is something not new. In this regard, in this organization, appear, I happens to be an act as a advisory member, one of the advisory member. The proposal of the 5 items made by our appeal president, it is quite important. What I feel is the narcotic department in the state is clubbing with tax and excise department. As per his desire of our president appeal, we have decided to take this narcotic department as independent department in the state of Arunachal. This has to be brought forward in the eyes of the government, and this department, our narcotic department, is preferably, what I feel is, it should be in the hand of Home Ministry. When it clubbing in the
into the home department, it will be far better. It seems the government of Arunachal Pradesh, since long back, I think this was have to put in the unanswered question in the floor of house in the state assembly. It could have been discussed, but till now we don't have any uh, voice. None of our 60 legislators has raised this voice in the state assembly. Through this media, on behalf of our appeal team organization, I would like to inform some of our legislator, the lawmaking body people. Why not this narcotic department can be bring into a separate department to deal with the social drugs maniac manage. In fact, majority of our state districts are inflicted with drug substance. Our younger generations today, they are nowhere. I think the decision to make an independent department could able to manage and handle properly in the lines of uh, NCB. The absence of independent department and the main power in the same department of narcotic, we cannot undertake some of the national policies like Nasha Mukt Abhiyan, as well as in collaboration with your NCB. The objective of NCBs cannot be properly adhered and implemented in this our state. So what we feel is, if the department happens to manage well and separated, stand separated, it could, we believe, it could deal the drug inflicted society. It can properly handle the inflicted society. In fact, everybody knows this is a dreaded social menace which the state government should take an appropriate measure, as well as through this organization. I would like to appeal to the entire CBOs of the state. We do have lot of CBOs across every district. CBOs means what? We are the parent organization of the youth, young boys and girls, those who are inflicted with drugs. It brings a misery and intolerable miseries. Everybody have their own relatives and family. Everybody having that kind of those children who are somewhere afflicted with unwanted substances. Our younger generation, our family relatives, they are using.
So this is a great concern for all of us, every citizen of the state. So in that way, the APIO intending to organize uh, on voluntary basis uh, awareness campaign, information, education and communication, and then anti-drug movement across the state as decided by our president. In that way, this is not uh, personal concern. In fact, it eroded our society, mental health of the our younger generation people are today facing a lot of problems. At the same time, I must have one reminder to the viewers. In the last uh, system of the governance called by our Honorable Chief Minister, including every deputy commissioners of the district, there we had come across Shikshit Arunachal, Dikshit Arunachal, Surakshit Arunachal, and many more such newer slogans has been given to us. We are very much happy to hear that we are going to be Dikshit, we are going to be Surakshit. In that way, this drug addiction and de-addiction in particular is comes under one of the that slogan, perhaps maybe of Surakshit Arunachal. We are very much inclined upon the government of this state. Today and tomorrow, we are going to live in the society where such drug abuses and using of substances which are unwanted in the society can be, our younger generation can be supposed to be called as Surakshit. In that line, we appreciate the government as well as uh, particularly we are appealing the state government should uh, try to bring in a separate narcotic department in the state. It will be the honest one. It may be the honest policy to deal with the drug menace in the state. At the same time, mm, this narcotic department would have club in the Ministry of Home. It will be far better. This is our opinion of the all Arunachal Pradesh Youth Organization up here. So in that way, we do believe in the days to come, our social problem of drugs can be addressed through the participation of CBOs and NGOs or some interested citizen
students, all they should participate and active participation. At what extent we can eradicate. And lastly, I want to say, while appealing this, we cannot say, we are not saying we can able to uh, directly able to make clean environment, but we promise, we assure that at least if we undertake this initiative on behalf of this organization, we opine there may be some certain declination of using the substance by our younger generation people. In that respect, uh, supply and demand, how to deal with this supply and demand, how to make a proper strategy of your implementation of various acts, available acts for this substance, which our younger generation are inflicted now. So in that way, we had a great belief to the people of this state. Everybody should. This is the need of everyone's problem. Everyone should try to address anywhere, any moment, anytime. Every individual of this society, our state citizen, we appeal all the parents, like-minded people to keep in mind how the using of drug substance it really disturbing the society and the mindset of especially the parents of those addicted people. So in that way, thank you very much.